हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ जून 30, 2023. Some of the important news which we are going to focus is especially that is open market sales scheme. We have done this news before also. Today it will be a revision. We will also come to know about the background of this scheme, which is important for our exam. Then the second important news which we are going to focus is related with Assam delimitation, which we already did last week. Again, it will be a revision for us, and I had already told you that this is going to be an important news. So we are going to this. We are going to do these two things very importantly from today's newspaper. Apart from this, we are going to focus on defense news and other important news from our exam point of view. So before reaching to the editorial, let's take some news from the front page, which is very important. Now see this news. That is, it says that Tamil Nadu governor dismisses minister backtracks later. सो यहाँ पे हम तमिलनाडु की अब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रेड्डी, सो यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि दैट विदाउट कंसल्टिंग विद चीफ मिनिस्टर he had taken a unilateral decision to dismiss the minister, that is V. Senthil Balaji, from the Council of Ministers. So if you will see this news, so the crux is that he dismissed with immediate effect the arrested minister V. Senthil Balaji from the Council of Ministers, and later he backtracked his decision. Okay, now यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे जो मिनिस्टर की बात हो रही है वी सेंथिल बालाजी, सो वी ऑलरेडी नो दैट ही वाज अर्लियर द इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर and then later he was arrested, okay, in an alleged money laundering case. So you will see that Mr. Senthil Balaji, he was earlier this month arrested by the Enforcement Directorate in an alleged money laundering case. Then later on he was hospitalized after his arrest, and he underwent a beating heart coronary artery bypass surgery recently. अब यहाँ पे जो इशू है वो ये है that the order from the governor, it did not specify any legal provision under which the governor has taken this decision. Okay, so normally हमारे constitutional scheme of works में we have adopted the parliamentary form of democracy. So over here the elected ministers, so they can be removed by the governor only if the chief minister says so. Okay, that is our constitutional scheme in normal circumstances. Now एक environment से related news है, that is from the डेबरीगढ़. So डेबरीगढ़ यहाँ पे एक है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. Now it was in news because it has been made completely free of any human settlement, and it is one of the country's largest peaceful relocations of forest dwellers. So 400 families who were living around this wildlife sanctuaries, now they have been relocated. So now, if you will see that it stands out as an exception alongside Nalbana Bird Sanctuary in Chilika Lake, where human settlements which were earlier quite common, now they have been relocated. अब इसका एक positive impact पड़ा है. If you will see, the positive impact of relocation was immediately evident in the tangible drop in incidents of man-wildlife conflict in Dibrugarh. Okay, so यहाँ पे if you will see that this uh, wildlife sanctuary has witnessed a tiger from neighboring Chhattisgarh crossed over into Debrigarh also. Now let's see that is a relocation है, how it is a win-win situation for both relocation. तो एक तो ये है कि there will be decrease in wildlife conflict, ये important चीज है. Second, जो human settlements यहाँ पे थे, they did not have access to basic facilities like electricity, healthcare and education. Okay, so now after the relocation एक तो wildlife conflict reduce हो जाएगा और जो habitats थे, ठीक है ना, after the relocation now they will have access to basic facilities. Now let's see some of the opinions related to this. Now see, Chief Justice S.V. Gangapurwala, okay, wondered whether the High Court could interfere in such issues by exercising its power under Article 226, that is writ jurisdiction of the Constitution, where governor had only expressed his dissent and not passed any positive order dismissing or removing the minister from the government. So if you will see that the Chief Justice has also pointed out that Article 164, it states, now this is important article, that the governor shall appoint ministers on the advice of the chief minister, and it does not speak about the power of dismissal. This is the view which is held by the Chief Justice S.V. Gangapurwala.
Now let's come to the violence in elections. So we are talking about Bengal, which is witnessing a violence in elections. तो इसकी वजह से जो एक problem हुआ है, especially the women candidates. So if you will see the women candidates, they are facing intimidation and death threats while filing their nomination papers for पंचायत election. So अगर आप देखें तो जो हमारा 73rd Constitutional Amendment Act है, it provides 33% reservation for women in पंचायत elections. So यहाँ पे जो women जो हैं अब because of violence and death threats, so they are failing to file their nomination papers, and several women candidates, especially from opposition parties, they have been forced to leave their homes and seek refuge in temporary shelters. The next is from defense, that is India Philippines to explore scope of joint sales patrols to boost defense partnership. So Philippines, it is the member of ASEAN, that is Association of Southeast Asian Nations. ओके रिसेंटली जो इंडिया जो है उसने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी सेल किया है ब्रह्मोस मिसाइल एंड सो नाउ हियर these two countries they are discussing more defense partnership. So if you can see that सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंडिया और एशियान में अब जो रिलेशनशिप है, so India started as a dialogue partner and now India and ASEAN they share a comprehensive strategic partnership. So now our Foreign Affairs Minister S. J. Shankar has highlighted that between India and Philippines there is a lot of scope for expansion of defense cooperation, especially in maritime security, including the potential for joint sale as well as joint patrols. Okay, so these are the two important things. So अगर हम देखें यहाँ पे, so the meeting, so it was a joint statement. It was issued after the 5th meeting of the Joint Commission on Bilateral Cooperation. Okay. उसके बाद if you will see that maritime cooperation can take the shape of exercises related to maritime domain awareness. There could be a combination of other activities also. Then the other cooperation is in cyber security, in artificial intelligence and space cooperation. Then if you will see the key dialogue, it was not only in terms of weapons but also cooperation through training courses, greater military exchanges, and in future holding joint exercises. Then the two sides they also discussed improved access to the Philippines markets. So the statement says that ministers also underlined that both countries have a shared interest in a free, open, and inclusive Indo-Pacific region. Okay. Now, if you will see the Indo-Pacific region, so India is already a member of Quad, that is Quadrilateral Security Dialogue. In Quadrilateral Security Dialogue, we have 4 countries who are the members. These 4 countries are India, USA, Japan, and Australia. उसके बाद रिसेंटली इंडिया ऑल्सो हेल्ड इट्स इनॉग्रल मैरीटाइम एक्सरसाइज विद एशियन कंट्रीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं AIME 2023. सो इट्स फुल फॉर्म इज एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023. नाउ दिस एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसके 2 फेजेस थे. एक था आपका हार्बर फेज. तो हार्बर फेज कहाँ पे हुआ था? दैट इज चांगी in Singapore. Okay, that is harbor phase. उसके बाद sea phase. Sea phase happened in South China Sea. Now the next is about the India's giant meter wave radio telescope. So it is this India's giant meter wave radio telescope. It is among the world's 6 largest telescope that has played a vital role in providing evidence confirming the presence of gravitational waves. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हमने पहले भी इसको न्यूज को लिया है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होता है दे आर वेरी वीक वेव्स. तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एक जो लेबोरेटरी होती है जिसको कहते हैं लीगो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है. सो लीगो इन इंडिया, लीगो इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड इन हिंगोली, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट हिंगोली इन महाराष्ट्र. नाउ दिस जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप, इसने भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प किया है, बट दैट इज यूजिंग पल्सर ऑब्जर्वेशंस. सो if you will see that monitoring pulsars which are called as nature's best clocks by using 6 of the world's most sensitive radio telescope. One of that radio telescope is in India also. Okay.
So if you will see the results which is provided by this radio telescopes, they provide a hint of evidence for the relentless vibration of the fabric of the universe caused by ultra low frequency gravitational waves. ठीक है, तो gravitational waves जो होते हैं, for example, if two bodies like big stars, if they are accelerating towards each other, so they cause ripples in space-time framework. So that ripples is called as gravitational waves. ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, इसको सबसे पहले पोस्टुलेट किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में. नाउ इफ यू विल सी फर्दर, नाउ दिस वेव्स, अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात कर रही है, ये ओरिजिनेट कैसे करती है, दैट इज ब्लैक होल्स. व्हेन ब्लैक होल्स, डांसिंग मॉन्स्टर ब्लैक होल पेयर्स, मतलब व्हेन दे कम, ब्लैक होल्स व्हेन दे कम टुवर्ड्स ईच अदर. Okay, these black holes, they are crores of times heavier than our sun. Then there was a team consisting of a European Pulsar Timing Array and Indian Pulsar Timing Array consortia who have published their results in the Astronomy and Astrophysics Journal, and they have shared their results at which hints at the presence of gravitational waves in their data. Okay, अभी जो है एक टाइम एबरेशन जो है, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द सिग्नल्स व्हिच वाज emerging फ्रॉम द पल्सार्स व्हिच वाज रिकॉर्डेड बाय दिस मीटर वेव. नाउ ये जो पल्सार्स होते हैं, दे आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर एसेंशियली numbers of dead stars which are present in our galaxy. तो जो pulsars जो होते हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स स्टार्स जो होते हैं, जो डेड स्टार्स से एसोसिएटेड होते हैं, तो ये न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं वो इसको एमिट करते हैं. तो ये जो पल्सार होता है, ये कॉस्मिक लाइट हाउस की तरह होता है एज इट एमिट्स रेडियो बीम्स. ओके, एंड दैट इज कैप्चर्ड बाय दिस giant meter wave radio telescope. The next news is again from Panchayat. अब 15 अगस्त से only digital payments will happen in Panchayat. So all panchayats across the country will mandatorily use digital payments for development work and revenue collection from this Independence Day. Okay, and such panchayats, they will be declared as UPI enabled. After that, we will see that Sunil Kumar, who is Secretary in Panchayati Raj Ministry, has said that almost 98% of the panchayats had already started UPI based payments. तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, मतलब करेंसी नोट्स डिफरेंट कंट्रीज के जो G20 के मेंबर्स हैं, दैट विल बी फीचर्ड विच हैज सम हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक $100 का नोट होगा विच विल फीचर इंडिपेंडेंस हॉल ऑफ फिलाडेल्फिया. उसके बाद एक 5 पाउंड ब्रिटिश नोट होगा विच विल हैव वेस्टमिंस्टर एबी. And currency notes from Brazil and Argentina, they will be featuring Iguazú National Park that lies on the border between the two countries. अब यहाँ पे हमको एक static information भी मिल गया कि Iguazú National Park किस कॉन्टिनेंट में है and it lies on the border between which two countries. 5 Indian currencies. So if you will see, like rupees 20, which carries the image of the Sun Temple at Konark, rupees 10 with Ellora Caves, rupees 500 with Red Fort, and two separate notes of rupees 100 with Kanchenjunga Mountains and Gujarat's Rani की वाव. अब इसमें से जो दो नोट हैं, दैट इज 5 इंडियन बैंक नोट में से एक जो 100 रुपीज का नोट है विद कंचनजंगा एंड रुपीज 20 नोट, दे हैव बीन प्रिंटेड बिफोर द 2016 demonetization. From international foreign affairs, so if you will see, Turkmenistan unveils $5 billion smart city in honor of national leader. So तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे आप एक चीज याद करेंगे कि तुर्कमेनिस्तान, इट इज वन ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्री, बट तुर्कमेनिस्तान जो है, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये चीज आप याद रखिएगा. ठीक, इफ यू विल सी दैट इट वाज फॉर्मली द पार्ट ऑफ USSR, that's why it is called as ex-Soviet Central Asian country, and it is one of the most secretive countries in the world. उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में इनॉग्रेशन हुआ है, इसका नाम देख लीजिए, अर्कादाग. Now what is this Arkadag? It is a $5 billion smart city built in honor of former leader, that is Gurbanguly Berdimuhamedow. The next is the Rwandan policy of the British government. तो एक UK court of appeal है, it has ruled against the UK government plan to send some asylum seekers to Rwanda.
मतलब यहाँ पे यूके गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि जो इंग्लिश चैनल क्रॉस करके यूके में आते हैं, ठीक है, उन्हें यूके में आने से पहले उनको रवांडा शिफ्ट किया जाए जब तक उनका पेपर वर्क यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। ठीक, तो इस पॉलिसी को वहाँ के कोर्ट ऑफ अपील ने जो है वो इसके अगेंस्ट रूलिंग दिया है। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे जो रवांडा पॉलिसी है, इट इज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप द बोट स्ट्रेटेजी। और वो इसमें क्या होता है कि दैट बहुत सारे ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, दे ट्राई टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल एंड दे ट्राई टू एंटर यूके, बट इट कैन बी चैलेंजिंग एंड डेंजर ऑल्सो। तो इसको डिटर करने के लिए जो माइग्रेंट्स हैं वो आर क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल टू एंटर द यूके, ये जो रवांडा पॉलिसी है ये सीक करता है टू सेंड दिस असाइलीज टू रवांडा while their applications are adjudicated। तो उसके बाद जो यूके हाई कोर्ट है, इट हैड रूल्ड लास्ट दिसंबर दैट इट वाज लीगल, बट इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है कोर्ट ऑफ अपील ने। द नेक्स्ट इज द न्यूज फ्रॉम यूएस। So US top court rules against race-based admission in universities। So US सुप्रीम कोर्ट जो है इसने स्ट्रक डाउन किया है एक रेस कॉन्शियस स्टूडेंट एडमिशन प्रोग्राम जो करंटली होते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में। Okay, so this setback to affirmative action policies often used to increase the number of Black, Hispanic, and other underrepresented minority groups on campuses। तो यहाँ पे जो जजेस थे, they ruled in favor of a group called Student for Fair Admissions, founded by anti-affirmative action activist Edward Blum। अब यहाँ पे देखिए हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने क्या किया है, they say that they use race as only one factor in host of individualized evaluations for admission without quotas, and that curbing its consideration would cause a significant drop in enrollment of students from underrepresented groups। Then the news from France, that is unrest spreads in France over police shooting of teen। तो यहाँ पे now protest has again started। France was previously France was new in news because people were then protesting against the uh, pension policies and retirement policies of the France government। Now again President Emmanuel Macron is in a tight spot because now he is battling to contain a mounting crisis that has erupted over the deadly police shooting of a teenager of North African descent during a traffic stop in Paris suburb। From Sri Lanka, that is Sri Lankan Central Bank moves recast of pension funds haircut on bonds। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ा था कि आईएमएफ ने श्रीलंका को $3 बिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फंड, बट इसका जो एक कंडीशन है आईएमएफ का, दैट इज डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग दो टाइप का, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक, तो यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं इंटरनल डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। सो इफ यू विल सी ओवर हियर दैट श्रीलंका सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, इसने रिस्ट्रक्चरिंग को प्रपोज किया है fine by recasting the outgo of country's pension funds and offering international sovereign bondholders as a repayment plan that entails 30% haircut। ओके, सो यहाँ पे देखिए इस प्लान के अंदर क्या होगा, सो यहाँ पे क्या होगा दैट टू प्रोटेक्ट द लोकल बैंक्स। तो इफेक्टिवली जो है यहाँ पे बर्डन जो है to superannuation funds, that is pension funds, it will be transferred including the employees provident fund। So the central bank, it will convert treasury bills and exchange superannuation funds, treasury bonds to longer term maturity treasury bond at lower interest rate। This is the debt restructuring for domestic market। Fine। इसके बाद अगर आप देखें कि इंडिया श्रीलंका के पास देखिए डेप्ट कितना है, जो जो डोमेस्टिक डेप्ट है, okay, that is if you will see, and foreign debt। So foreign debt is $41.5 billion and domestic debt is $42.1 billion। फाइन, उसके बाद जो गवर्नमेंट है इट होप्स टू रिस्ट्रक्चर इज $17 billion ऑफ इट्स फॉरेन डेट इन अनदर 5 years। उसके बाद श्रीलंका का और क्या टारगेट है, दैट इज टू रेड्यूस इट्स पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो फ्रॉम 128% टू 95% बाय द ईयर 2032। इसके साथ साथ जो की बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं जापान श्रीलंका के, लाइक इंडिया, जापान, पेरिस क्लब ग्रुप,
So they have also set up a common platform to jointly evolve a debt restructuring plan for Sri Lanka that is based on the principle of creditor parity. Now all eyes are on China, which is Sri Lanka's largest bilateral creditor, which is yet to officially join in the process. Now we come to the news exploring Assam's delimitation draft. तो जून 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल रिलीज किया है ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट इज ऑफ बोथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असम. यहाँ पे द नंबर ऑफ सीट्स आर अनचेंज्ड, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नंबर ऑफ सीट इज एट 126 एंड पार्लियामेंट्री सीट्स के लिए देयर आर 14. बट यहाँ पे ये है कि मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज बीन रीशेप्ड एंड नंबर ऑफ सीट्स हैव गॉन अप. Okay, so if let's see the important point in this news. Now the first is that what is the delimitation? So delimitation होता है process of redrawing the boundaries of Lok Sabha and State Assembly constituencies. Delimitation का एक जो major objective होता है that is to ensure each seat has an almost equal number of voters. ठीक है. Then if you will see कि ideally it is carried out every few years after a census is done by an independent delimitation commission. Now delimitation commissions, they are established under Delimitation Commission Act, and these have been set up in various years like 1952, 62, 72, and this exercise was suspended later in 1976 due to family planning program. Okay, उसके बाद आप देखेंगे कि delimitation चार states के like Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur and Nagaland, they were deferred due to security risk through presidential orders. That was in 2008. But if you will see in the case of Assam, वहाँ पे बहुत से लोग ये चाहते थे कि डिलिमिटेशन तभी होना चाहिए जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है वो अपडेट हो जाए ताकि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो उस लिस्ट से बाहर हो. Then what happened was the center it reconstituted delimitation commission for 4 northeastern states and Union Territory of Jammu and Kashmir on March 6, 2020. उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है इट हैज नोटिफाइड द इनिशिएशन ऑफ असम डिलिमिटेशन ऑन December 27, 2022. अब इस डिलिमिटेशन में क्या हुआ कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स दे हैव बीन रीमर्ज्ड विद वन दे वर कार्व्ड आउट ऑफ. मतलब पहले क्या हुआ था कि एक डिस्ट्रिक्ट थे उससे 4 डिस्ट्रिक्ट्स बने थे. अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट को फिर से रीमर्ज कर दिया गया है इस वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डिलिमिटेशन 24 असेंबली सीट्स जो हैं वो रीशेप किए गए हैं. ठीक है, उनकी नेमिंग भी चेंज हुई है. और उसके बाद जो नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब्स के ये भी इंक्रीज हुए हैं. ठीक है, 16 से 19 और 8 से 9. देन इफ यू विल सी फॉर एग्जांपल दैट the number of reserved Lok Sabha seats would remain the same, but Silchar would become reserved for scheduled caste in place of Karimganj. Now, if you will see that इसके against protest भी हो रहा है that there are many ethnic groups such as Ahoms, they are disappointed with the numbers of reserved seats. They say now that the number of assembly seats they have reduced from eastern Assam and they have increased in western Assam. Now, इफ यू विल सी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर इट हैज इनिशिएटेड द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. सो हियर मैनी पीपल आर नाउ आर्गुइंग कि दैट सेक्शन 8A of Representation of Peoples Act 1950 it only allows the reorientation of seats without any change in the total number. The second is that यहाँ पे 2011 का सेंसस यूज नहीं किया गया था. जो लेटेस्ट सेंसस डेटा अवेलेबल था यहाँ पे 2001 का सेंसस डेटा यूज किया गया है. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो AIUDF के जो बदरुद्दीन अजमल है he has said that Assam's delimation could have been carried out along with the rest of the country in 2026 instead of rushing it through ahead of 2024 Lok Sabha polls. उसके बाद people across Bodoland territorial region they are happy with the proposed increase of assembly seats there from 16 to 19. तो किसी किसी रीजन में assembly seats बढ़ गई हैं, 16 से 19 हुआ है. फिर आपने यहाँ पे देखा ईस्टर्न असम में तो वहां पे कम हो गया है. वेरी शॉर्ट न्यूज दैट इज ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर व्हीट एंड राइस. तो पहले हम देख लेते हैं कि ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है, तब ये स्कीम हमको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज द न्यूज ओवर हियर. तो एक ओपन मार्केट सेल स्कीम चलता है. यहाँ पे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इट सेल्स सरप्लस फूड ग्रेन्स फ्रॉम द सेंट्रल पूल
स्पेशली व्हीट एंड राइस इन द ओपन मार्केट। किसको बेचती है ये? ट्रेडर्स, बल्क कंज्यूमर्स, रिटेल चेन्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसको, इस स्कीम का? दैट इज टू स्टेबलाइज द प्राइस राइस, टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो होता है पूरा प्रोसेस, ये ई ऑक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ई ऑक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे ट्रेडर्स, बल्क कंज्यूमर्स, रिटेल चेन्स ये खरीदते हैं इसको। बट इफ यू विल सी दिस ईयर देयर हैज बीन सम चेंजेस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पहले जो मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउड था बिडर के लिए इन अ सिंगल बिड, दैट वाज 3000 मेट्रिक टन्स। नाउ द बायर का जो लिमिट है, इट विल नाउ रेंज फ्रॉम 10 to 100 मेट्रिक टन्स। सो नाउ व्हाई, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्लेम करता है कि टू अकोमोडेट मोर स्मॉल एंड मार्जिनल बायर्स एंड टू एंश्योर वाइड रीच ऑफ द स्कीम। द नेक्स्ट इज to curb retail prices as allowing smaller bids should ideally break monopolies of bulk buyers. उसके बाद द नेक्स्ट इज यहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं, अब इस न्यूज पे आइए, states they are allowed to procure food grains through OMSs without participating in the auction, फाइन। बट यहाँ पे अब इस साल क्या हुआ है कि सेंटर हैड डिसाइडेड कि दैट स्टेट्स दे विल नॉट गेट द व्हीट एंड राइस अंडर दिस स्कीम। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जून 13 का नोटिफिकेशन, इट हैज स्टॉप द सेल ऑफ राइस एंड व्हीट फ्रॉम द सेंट्रल पूल अंडर द OMSs टू स्टेट गवर्नमेंट्स and also disallowing private bidders to sell their OMS supplies to state government। तो यहाँ पे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फाइनेंस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, दैट इज अशोक के मीणा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। सो ही हैज सेड दैट सेंटर जो है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 already it is distributing grains to 80 crore people and now it has an obligation to 60 more common consumers who are affected by retail prices। अब यहाँ पे स्टेट्स देखिए किस तरीके से इम्पैक्ट होंगे। तो कर्नाटका का एक अन्न भाग्य स्कीम है, यहाँ पे इस स्कीम का एम है टू गिव राइज टू मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज। इट वाज द पार्ट ऑफ द पोल प्रॉमिस ऑफ द रिसेंटली इलेक्टेड कांग्रेस गवर्नमेंट। सो नाउ दे विल नॉट बी एबल टू गेट मोर राइस अंडर OMS schemes, they have to look for alternatives। उसके बाद तमिलनाडु का अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इट इज ट्राइंग टू परचेज 50,000 टन्स ऑफ राइस फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज अदर देन FCI। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.